आज सिखलेंस सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल जो थर्ड एडिशन होने जा रहा है 2022 में, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज सिखलेंस सिख आर्ट्स एंड फिल्म फेस्टिवल जो थर्ड एडिशन होने जा रहा है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये संडे को 20 फरवरी को टैगोर थिएटर में होगा, सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। आप कैसे जुड़ गए SikhLens के साथ? तो जस्ट काफ़ी टाइम से आपको देखते जी, इस SikhLens थर्ड ईयर है एंड जो मेरा इसमें रोल है, मैं इंडिया हेड हूँ और फेस्टिवल डायरेक्टर हूँ SikhLens का। सो मेरा लगाव फिल्मों के साथ है, स्टोरी टेलिंग के साथ है और अच्छी स्टोरीज़, अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे आर्ट को इंकरेज करना है, चाहे वो किसी भी कल्चर से आता हो। और कौन-कौन जुड़ रहा है SikhLens के इस एक्टिविटी के साथ? नहीं, देखिए, मैं इस साल की ख़ास बात करूँगा। इस साल सरदार फौजा सिंह आ रहे हैं जो 111 वर्ष के हैं और हमारे पेट्रन हैं। इस साल उन्हें नवाजा जाएगा और बड़ी एक अच्छी अनाउंसमेंट की जाएगी उनको लेके। बहुत बड़े बड़े ह्यूमैनिटेरियंस जिन्होंने पंजाब में बड़े स्तर पे सेवा की है, वो आ रहे हैं इस बार हमारे पास। बहुत सारे फिल्म एक्टर्स आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, मतलब मेला लगा है इस साल। और मुझे बहुत खुशी है कि सब लोगों ने हमें अप्रोच किया और कहा कि हम इस बार फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमने उन्हें बुलाया। होने क्या वाला है जी के इस फेस्टिवल में? होने क्या वाला है? जी, इस साल 24 फिल्में दिखाई जाने वाली हैं। इस साल 24 फिल्में दिखाई जाने वाली हैं जो कि 11 देशों से हैं, 3 भाषाओं में हैं। और स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन होगी, नेवर सीन बिफोर, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स हेरिटेज कलेक्शन के ऊपर 100 से अधिक बुक्स दिखाई जाने वाली हैं। पूरे दिन में लगभग 10 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, यानी कि आप मान के चलें कि 10 घंटे की प्रोग्रामिंग में 24 फिल्में हैं, इतना सारा आर्ट है, फुल दिन धमाल है। जी जी जी, ये बुक SikhLens प्रोडक्शंस की एक इंटरनेशनल बुक है जो कि UK में पब्लिश की गई है, जिसको लिखा है हरिंदर सिंह ने और जिसकी कंप्लीट इलस्ट्रेशन द वर्ल्ड रेनाउंड सिंह ट्विंस ने की हैं। और ये बुक SikhLens पब्लिकेशंस द्वारा रिलीज़ की जाने वाली है। SikhLens और किन-किन कंट्रीज़ में ऐसी फेस्टिविटी करता है जी या करेगा? जी, SikhLens ये मैंने किधर देख के बोलना है? किधर देख के बोलना है? जी, SikhLens हर साल यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया में होता है, एक एनुअल फिल्म फेस्टिवल है। ये SikhLens का 22वां साल है और उसके बाद हम इसे इंडिया इंट्रोड्यूस किया 2020 में, जहाँ हमने पहला फेस्टिवल किया। और इस साल UK में होने जा रहा है, मतलब USA और इंडिया के बाद UK में अब आप SikhLens को देखेंगे। जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए SikhLens क्या करता है? बडिंग आर्टिस्ट के लिए SikhLens फिल्म्स कमीशन करता है, उनको इंकरेज करता है कि वो फिल्म सबमिट करें। उनका फिल्म्स अभी तक आप देखें हम फ्री में शोकेस कर रहे हैं ताकि ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट ना किया जा सके, ताकि ज़्यादा तादाद में लोग आएँ और इन्हें देखें। बडिंग आर्टिस्ट अपने आर्ट को एग्जिबिट कर सकते हैं हमारे फेस्टिवल में और बहुत लोग इस बार कर रहे हैं। आप देखें तो 18 वर्ष से कम उम्र की लोग से लेके 70 वर्ष के लोगों तक लोग एग्जिबिट कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं, जुड़ कैसे सकते हैं? SikhLens.com पे आएँ, मुझसे मिलें, मैं अवेलेबल हूँ। हमारी वेबसाइट से हमें अप्रोच कर लें एंड हमारा नंबर है, अगर आप हमारे होर्डिंग्स वगैरह देखें उन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिल्म सबमिट करने के बाद कुछ पैसे भी मिलेंगे? नहीं, सबमिशन फिल्म फेस्टिवल में ऐसे नहीं होती है। आप फिल्म देखेंगे और अगर फिल्म फेस्टिवल के दायरे में फिट होती है तो वो फिल्म अप्रूव होती है और चलाई जाती है। कितने मिनट की मिनिमम फिल्म होनी चाहिए? तो वैसे आपको बता दूं कि फिल्म फेस्टिवल कभी भी सबमिटर को पे नहीं करता अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ उसको कहीं से फंड्स आते हैं? फंड्स हैं, अगर SikhLens इंटरेस्टेड है अगर उस आर्टिस्ट में या उस प्रोड्यूसर के साथ काम करने में, तो भी कमीशन वर्क। सबमिशन की रूल्स बता दीजिए। सबमिशन के रूल्स आपको SikhLens.com पे आप जाएंगे तो आपको जो भी सिख सेंट्रिक सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर, हेरिटेज, कल्चर, ह्यूमन सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उनके ऊपर अगर आप फिल्म बनाते हैं तो आप डेफिनेटली SikhLens को। Welcome to the press conference of Season 3 of SikhLens, Sikh Arts and Film Festival 2022, the India chapter. We are very, very excited to showcase all the exemplary work that we have accomplished over the years, and even more glad that we always pick out Chandigarh as our venue of 24 films in the second season, and now eventually the showcase of 24 films in 2022. A total of 65 films will be achieved after the end of the season 3, and we have a target of achieving 100 films by next year. Now that is quite an achievement in itself, isn't it? And now let me introduce you to the major attractions for this year. There will be a showcase of 24 films, including narratives, documentary, musical, and animation produced in 11 countries
out of which 6 will be from India, 3 from United States of America, 5 from United Kingdom, 1 from Pakistan, 1 from Singapore, 1 from France, 1 from Malaysia, 2 from Thailand, 2 from Canada, 1 from Australia, and 1 from Nepal. There will be a display of the largest coin collection and artifacts of history and culture by Parminder Singh. Furthermore, more than 100 books from various Sikh subject matters will be at display by various organizations and authors. A major point to be noted is that all the screening and display comes at free of cost to all the visitors. The world premiere of Sarbat Da Pala, directed by Ojasvi Sharma, will be the closing film of the festival this year. Sardar Fauja Singh Ji will be honoured by SikhLens. A film on him will also be announced titled as Fauja Singh Going the Distance. Sikh composers will be the closing performance of this year's festival. A poetry reading using Lost Words of Punjabi by Jatin Sarwan from the recently launched book Foodie will also be held at the festival. Special Gatka performance by Shakir Baba Deep Singh Ji Gatka Akhada will also be held. Furthermore, there is a special performance by veteran Punjabi singer Dolly Guleria and her daughter Sunaini Sharma. There will be special performances by bodybuilders and fitness enthusiasts featuring Kirpat Singh, who is now 78 years old. More than 100 books by multiple authors and publications will be at display. The SikhLens calendar of 2022 with the theme The Fort of Maharaja Ranjit Singh in Lahore will also be on display, and eventually the SikhLens channel will be announced. A glance of the coin collection, book launches, poster launches and the calendar are on display at the back today as well. And now I would like to hand over the dice to Ojasvi Sharma, the India head and festival director of SikhLens. सारी मीडिया ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟੁਡੇ ਐਂਡ this was Simardeep Kaur who is hosting our press conference today, and before I begin with reading the details ki kal ਸਾਡੇ festival te ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, I would like to introduce our anchors for the festival this year. This year SikhLens will be hosted by 4 anchors, and it will begin from Sarvapriya Nirmohi sir, a senior broadcaster from radio and television, Tejeshwar Singh, film and television actor, Khushpreet Kaur, film and television actor, and Lily Swaran ma'am, who is a very well renowned poet and author from Chandigarh. The total run time जो इस बार हम फेस्टिवल में देने जा रहे हैं वो 10 घंटे का है जी, और इसकी मेजर हाइलाइट्स जो कि सिमरदीप ने भी अनाउंस की हैं, मैं एक बार हाईलाइट करना चाहता हूं कि 10 घंटे के अंदर हम 24 फिल्में दिखाएंगे, 11 देशों में बनी हुई, 4 भाषाओं में बनी हुई. We'll have a very large exhibition display. We'll have more than 100 books on display. We have poetry, we have gatka, we have fitness motivation, we have singing. We have to honor Sikhs for their exemplary humanitarian work. We have a lot of films and books to announce, and then we have a musical concert by the visually impaired. And the host of this year's festival are with me, our founders of SikhLens, Gurpreet Kaur ma'am and Vicky Singh sir. So a big round of applause to the founders of SikhLens who have generously supported SikhLens in India. So I'll now pass on the mic to Gurpreet ma'am to share her thought on a very important project that we have achieved this year, which will also be highlighted and showcased this year, is the Destination S project Allegory. Ma'am, we would like to hear from you on that. The making of Allegory is based on the travels, the Udasis of Guru Nanak Dev Ji, following his travels exactly as he did them, as recorded in the Janam Sakhis, the earliest Janam Sakhis. In the time when Guru Nanak Dev Ji travelled, he did not have the current geopolitical situation that you do have now. You didn't have the boundaries, political boundaries that we have in these days. What Guru Nanak Dev Ji achieved over 500 years ago is today
divided into 9 countries, most of which are not accessible easily. In spite of that, the team tried to follow his udasis to all the places that he visited and give a perspective, first of all, to showcase the places that he went. And in the time that Guru Nanak Dev Ji lived and traveled, we did not really have gurdwaras. The gurdwaras have come and been built since then. So the places that Guru Nanak Dev Ji traveled to were places where, ascetics, disciples, people of faith gathered. So there would be multi-faith sites, Hindus, different branches of Hinduism, Vishnu, Shaivite, and Brahmic temples, Hindu places of worship, Sufi places of worship, and places where ascetics used to gather, including Tilajokya and all the way to Mansarovar. In today's time, they followed the journey safely, and allegory is the hidden meaning of what did Guru Nanak Dev Ji want to achieve, and what came out of that. So it's a parallel. There's 2 parallel stories going on. One is his journey being documented for posterity, and as well as philosophically. न्यूज़ टुडे लाइव के बोल देना। मैं न्यूज़ टुडे लाइव के सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें सिखलेंस को अपने चैनल पे स्थान। आप सभी को निमंत्रण है कि आप आएँ और सिखलेंस टैगोर थिएटर में 20 फरवरी को सुबह 11 से लेकर 9 बजे तक के बीच में कभी भी आके आप देख सकते हैं।